So hello, welcome back to Robust Tutorials. So Robust Tutorials में आपका स्वागत है और this channel provides you all the writing information, writing strategies that we can adopt while writing essays for different purposes. These essays can also be used as as college or magazine articles. ये अब एक क्वेश्चन आया हुआ है. In some countries, young people are encouraged to work or travel for a year between finishing high school and starting university studies. तो क्वेश्चन ये है कि discuss the advantages and disadvantages for young people who decide to do this. Now, question is very simple. We just have to discuss advantages and disadvantages. So it's not an opinion question. तो ये ओपिनियन क्वेश्चन नहीं है. इसमें कुछ ओपिनियन मत दो कि अगर ये करें तो वो हो जाएगा, अगर वो ना करें तो ये नहीं होगा. तो कुछ ओपिनियन ही देना है. जस्ट इसके जो बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं वही बताने हैं. तो मतलब इसको खींचना नहीं है. दूसरे कुछ क्वेश्चंस में जहाँ पे व्हाट इज़ योर ओपिनियन या व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस होता है क्वेश्चन, उसमें हम कुछ अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि अगर ऐसा करें तो ऐसा नहीं होगा या ऐसा नहीं होना चाहिए. बट इसमें बस फ़ायदे और नुकसान बताने हैं. ठीक है, लाभ और हानि का क्वेश्चन है. और मतलब कि जैसे किसी ने 12th की है तो कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है कि 12th के बाद क्या एक साल के लिए वो गैप ईयर दे देते हैं कि आप या तो काम करो या ट्रैवल करो. कॉलेज शुरू मतलब कॉलेज की स्टडीज शुरू करने से पहले, सो बिफोर स्टार्टिंग योर यूनिवर्सिटी स्टडीज. सो इज इट ए गुड थिंग और अ बैड थिंग? तो what are the plus and what are the minus? So let's start writing about this. So how to make the background for such a question? We can begin like this.
So what I've written is as one embarks onto the journey of pursuing higher studies, one always gets into a dilemma or a crossroad as to whether his decision to study further and what stream to pick. Which stream to pick which could make his or her life easier. तो मैंने ये लिखा है कि क्योंकि हम इम्बार्क करते हैं, इम्बार्क मतलब हम जंप करते हैं, मतलब हायर स्टडीज़ के लिए, क्योंकि हायर स्टडीज़ करने के बाद हमें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, जो कि हमें अच्छी सैलरीज वगैरह दे सकती हैं. वन ऑलवेज गेट्स इनटू ए डिलेमा. डिलेमा मतलब कि एक दुविधा हो जाती है कि मैं आगे पढूं या ना पढूं, और अगर मैं पढूं भी तो कौन सी स्ट्रीम लूं मैं, मतलब मैथ्स लूं, साइंस लूं, अकाउंट्स लूं, सोशल स्टडीज़ लूं, या मेडिकल में जाऊं, इंजीनियरिंग में जाऊं, किस में जाऊं. तो एक मतलब डिलेमा होना चाहिए, हो जाता है. और उसमें ये होता है कि कुछ कॉलेजेस में वो 1 साल का गैप इंकरेज करते हैं कि आप ले सकते हो, उसके बाद आप स्टडी वगैरह कॉलेजेस में जा सकते हो. तो ये वैसे अच्छी बात भी है कि पहले, क्योंकि लाइफ के बारे में डिसाइड करना, तो 1 साल के लिए आप सोच लो आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, या पढ़ना भी है आगे या नहीं पढ़ना है. क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप, कई लोग 12th के बाद भी अच्छा करियर बना लेते हैं. जैसे आपको पता ही है, बड़े बड़े जो इवन जो बिल गेट्स है, वो भी आई थिंक ही इज़ नॉट वेरी लर्नड पर्सन, और मे बी देयर आर मैनी पीपल हु आर नॉट वेरी लर्नड पीपल. लाइक हीरो होंडा का जो मुंजल है, मिस्टर मुंजल, पवन मुंजल, वो भी कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी उन्होंने अच्छी मैनेजमेंट की और अच्छा करियर बनाया, और हीरो होंडा को एक नंबर 1 कंपनी बनाया. आगे हम क्या लिख सकते हैं? So what I've written, hence if someone is given an opportunity to work or travel for a year before getting into a college, this would definitely have some pros and cons. तो इसमें कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो होंगे ही, फ़ायदे और नुकसान होंगे. तो हम डिस्कस कर सकते हैं.
Now let's get into the second paragraph. So before one starts thinking about the life, so here we can put before the life that one is thinking about, if one meditates about hurdles that may come when he starts the journey of life. It would definitely be it would definitely be a wiser option. So naturally it would be a wiser option that think before you jump. Right, so think before you jump is something we should, or maybe think twice before you jump. So taking any random decision would not be a good thing, right? So what else we can write?
If one is provided the opportunity of working at some company or organization, then one would get the know-how. He would also, we can say that he would also learn about the work ethics, learn about the work ethics, and one will also feel that one if one is able to gel into that atmosphere or not, about the work ethics and the feeling of gelling into an atmosphere, right? So here we can insert some connector also, moreover, or maybe furthermore here. Furthermore, this would help him or her in the long run. He or she would be in a better position about deciding further about the career that he or she wants to pursue. Right? For the rest of his life. Right, so what I've written, if one is provided the opportunity of working at some company or organization, then one would get the know-how about the work. Moreover, he would also learn about the work ethics and the feeling of gelling into an atmosphere. Furthermore, this would help him or her in the long run. He or she would be in a better position about deciding further about the career that he or she wants to pursue for the rest of his life. His or her life also, you can write. So this is the advantage of I think we have written about 150 or 170 words. So 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 or 15. So 15 5 is 75, and 15 6 is 90. So this is 100 words here about, and previous page also had the last page also had some 100 words. So about 200 words we have written. So what else we can write?
what is the there are actually number of benefits of doing this. Second advantage I think could be, one is the atmosphere, right? And one is also the second thing is that if one makes a better decision, then his life would be easier. So secondly we can write, secondly, if one is able to make a wiser decision, one is able to make a wiser decision, then one would reap the benefits later on. Else, a hastily made decision might land him or her into trouble. Right, so naturally, if one is able to make good decision, then he will be able to reap the benefits. So if one is able to make a wiser decision, will come, then one would reap the benefits later on. Right, so else a hastily made decision might land him or her into trouble. Right, so we can add some data also. So there is actually a data also which said that, for instance, a report on choosing a good career showcased that about 18% people had to change their profession after their 30s. So when they got to life, they had to change their career also. Many people change their career because they are not happy with their career, so they have to change.
Now third paragraph. ठीक है, तो मैंने और आगे क्या लिखा है, ऑन दी अदर हैंड, मतलब दूसरे तरफ इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक दो मेरे को लगता है डिसएडवांटेज भी हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कि अ गैप ईयर could be a problem if some college doesn't provide a seat to gap year students। तो अगर किसी कॉलेज की अगर पॉलिसी है कि गैप ईयर स्टूडेंट्स को हम सीट नहीं देंगे, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। वो कहीं घूमने फिरने चला गया स्टूडेंट जो है स्कूल ख़त्म करने के बाद 1 साल के लिए, या फिर काम करने लग गया, तो बाद में दोबारा उसने स्टडी शुरू करने की चाहिए, तो कॉलेज ने मना कर दिया अगर, तो तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सो दैट could be a problem if a college doesn't provide a seat। दूसरी डिसएडवांटेज क्या हो सकती है कि मोर ओवर वन मे नेवर बी एबल टू स्टडी फर्दर इफ वन लूजेज इंटरेस्ट इन स्टडीज। मतलब कि अगर स्टडी में कोई काम करने लग गया अगर, और उसका इंटरेस्ट लूज हो गया कि मैं नहीं पढ़ता आगे, तो नेचुरली वो आगे वो पढ़ नहीं पाएगा ना। तो हो सकता है उसका, अगर वो कुछ बड़ा बन सकता था, बाद में हो सकता है ना बन पाए। तो मतलब हर एक चीज़ के प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि इसके सिर्फ प्लस ही हैं, इसका कोई माइनस नहीं है। हर एक चीज़ के प्लस माइनस होते हैं। अब हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ क्या लिख सकते हैं। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में यही लिखेंगे कि हर एक चीज़ के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं। To conclude, one can say that there are more benefits than drawbacks associated with adopting
such a disposition. Right, so a small conclusion I've written. To conclude, we can say that there are more benefits than drawbacks associated with adopting such a disposition. Right, uh, so robust tutorials provides you with uh, in in-depth uh, knowledge and in-depth analysis about the topic. So if you have any doubt, you can contact me on robust tutorials on YouTube. So robust tutorials, or you can subscribe to this channel if you want to keep in contact and adopt a better strategy about writing essays and articles. So we will meet in the next class. Bye for now. Or you may send me your response to on this email address also, poplipol@hotmail.com. So bye for now.